Agar AAP AWS Certified Solutions Architect, Associate SAA-C03 exam की preparation कर रही हैं. To surf AWS services could definitions याद करना enough नहीं है. Real preparation tab होती है जब आप ये समझना start करते हैं. Given requirements के basis पर AWS कौन सा architecture choose करेगा और क्यों. और इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा complete SAA-C03 roadmap, syllabus, domains, question strategy, preparation plan, mock test strategy और end में एक ऐसी practice book भी शेयर करूंगा जिसमें 695 original exam style questions और 3 full length mock exams है. Hello everyone, welcome back. AAJK video specially on students, developers, cloud engineers, DevOps professionals, or IT professionals Kalia Hai Jo AWS Certified Solutions Architect, Associate Certification Crack Karna, Chat Hain. SAA-C03 एक memorization based exam नहीं है. आपको scenarios दिए जाते हैं, requirements दी जाती है, constraints दिए जाते हैं, और आपको decide करना होता है कि best AWS architecture कौन सा है. AWS Certified Solutions Architect, Associate Certification का primary focus high AWS services KOUs Karka secure, resilient, high-performing or cost-optimized architectures design Karna. Current SAA-C03 blueprint main 4 major domains hain. First, high design secure architectures, approximately 30%. IAM least privilege, cross-account access, KMS, encryption, VPC security, security groups, NACLs, WAF, shield, guard duty or secure application architecture J's concepts important hain. और इन domains को समझना preparation का first step है. इसलिए आज हम preparation को exactly इसी approach से समझेंगे. Second, high design resilient architectures, approximately 26%. यहाँ आपको high availability, fault tolerance, multi-AZ, multi-region, auto-scaling, load balancing, backup, disaster recovery, RPO, RTO, SQS, SNS or decoupled architectures KO understand Karna Haga. Third, high design, high-performing architectures, approximately 24%. ISM compute, storage, databases, caching, networking, content delivery. High-throughput workloads or performance optimization important hain, and fourth, high design, cost-optimized architectures, approximately 20%. Yahan APCO has 3 storage classes, EC2 purchasing options, savings plans, reserve instances, spot, serverless cost optimization, database optimization or data transfer cost J's concepts KO architecture perspective SE, Samajna Haga, Dadab Ek Bahut important point. SAA-C03 की preparation में आपको AWS services को isolated manner में नहीं पढ़ना चाहिए. For example, agar question में लिखा है. The company needs highly available architecture with unpredictable traffic and minimum operational overhead. तो आपको instantly सोचना चाहिए. Requirement क्या है? High availability. Traffic कैसा है? Unpredictable. Operational overhead. Minimum. अब architecture options compare हम. यही actual SAA-C03 thinking है. Exam में बहुत बार problem ये नहीं होती कि आपको service नहीं पता. Problem होती है कि multiple services correct लगती है. For example, SQS versus SNS, YLB versus NLB, RDS multi-AZ versus read replica, S3 versus EBS versus EFS, NAT gateway versus VPC endpoint, RDS versus DynamoDB, CloudFront versus Route 53. आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि सर्विस क्या करती है. आपको पता होना चाहिए कब उसे करनी है, कब नहीं करनी है, और सिनेरियो में AWS किस ऑप्शन को प्रेफर करेगा. क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें. Step 1, Requirement Identify करो. क्वेश्चन एक्चुअली क्या मांग रहा है. Step 2, Constraints Identify करो. Cost, Security, Performance, Availability, Operational Overhead. Step 3, Keywords नहीं, Architecture समझो. सिर्फ एक कीवर्ड देखकर आंसर मैच चूज करो. Step 4, Distractors eliminate करो. कौन सा option requirement violate करता है.
Step 5. Best answer choose करो. SAA एग्जाम में टेक्निकली पॉसिबल आंसर और बेस्ट आंसर अलग हो सकते हैं. इसी एग्जैक्ट प्रिपरेशन फिलॉसफी को ध्यान में रखकर मैंने एक कंप्लीट SAA-C03 प्रैक्टिस सिस्टम स्ट्रक्चर किया है. बुक में क्या मिलेगा? बुक को सिर्फ MCQ कलेक्शन नहीं रखा गया है. Part 1 and 2. Security Architecture or Secure Networking. Part 3 and 4. Scalability, Decoupling, High Availability or Disaster Recovery. Part 5 and 6. Storage, Compute, Databases, Caching or Networking. Part 7. Data Ingestion, Analytics or Hybrid Architecture. Part 8. Cost Optimization. Part 9. Cross-Domain Architecture Scenarios. Part 10. Advanced Mixed Practice. और उसके बाद 3 full-length 65 question mock exams. बुक में टोटल प्रैक्टिस वॉल्यूम को सिस्टमैटिकली बिल्ड किया गया है. 10 domain wise and advanced sections main 50 to 50 questions, yani 500 questions. Or उसके बाद 3 full-length mock exams, 65 questions each. That gives you a total of 695 original exam-style practice questions. और मॉक टेस्ट को सिर्फ फाइनल में सॉल्व करके स्कोर देखना इनफ नहीं है. हर मॉक के बाद एनालिसिस करना है. आपको चेक करना है सिक्योरिटी में कितने करेक्ट, रेजिलियंस में कितने, परफॉर्मेंस में कितने, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में कितने, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप रॉन्ग आंसर क्यों कर रहे हो. 3 mock TSTS mock test 1. First mock overall syllabus KO test करेगा. Mock test 2. Second mock higher difficulty or complex architecture scenarios par focus करेगा. Mock test 3. Third mock final exam simulation होगा, fresh scenarios और complete syllabus के साथ. Part 12. 30-day roadmap. Day 1 to 7. AWS fundamentals plus security and IAM. Day 8 to 14. Resilience, auto-scaling, load balancing, SQS, SNS and disaster recovery. Day 15 to 21. Storage, compute, databases, caching and networking. Day 22 to 25. Cost optimization and cross-domain architecture. Day 26 to 27. Weak topics revise Caro. Day 28. Mock test 1. Day 29. Mock test 2. Day 30. Final revision plus mock test 3. Part 13. Common mistakes. Visual. Red X animations. SAA-C03 candidates की कुछ common mistakes होती है. Mistake 1. AWS services KO definitions का form main memorize करना. Mistake 2. Question में एक keyword देखकर answer choose करना. Mistake 3. Security, cost or operational overhead KO ignore करना. Mistake 4. Multi-AZ or multi-region KO same samajna. Mistake 5. Read replica or multi-AZ ka difference clear na hona. Mistake 6. SQS, SNS or event bridge ka use cases confuse karna. Mistake 7. Mock test ke baad sirf score dekhna, mistakes analyze na karna. Final revision system. Book के last section में rapid review system भी है. एग्जाम से पहले पूरी बुक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. Final revision section का purpose high key AAP high value concepts KO quickly revise car saken. Ye book particularly useful high agar AP. AWS SAA-C03 first time prepare कर रहे हैं. Cloud engineering में जाना चाहते हैं. DevOps background से AWS architecture में move कर रहे हैं. Practice questions से अपनी preparation validate करना चाहते हैं. या multiple AWS services के बीच architectural trade-off समझना चाहते हैं. अगर आप SAA-C03 की preparation कर रहे हैं, तो एक simple rule याद रखिए. Don't memorize the cloud. Learn to architect it. Services याद करना preparation का एक part है. Lekin exam clear karn, Kalia APCO scenario KO read karna. Requirements identify karna. Wrong architectures eliminate karna or best solution choose karna आना चाहिए. इसी approach के around ये complete preparation system design किया गया है. Book का link description में available है.
अगर वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं SAA-C03 प्रिपरेशन में आपका सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा है. All the best for your AWS certification journey. Learn the architecture, practice the decision, master the scenario,